गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन है। इस चैनल में हम लोग बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हिस्ट्री से जुड़ा होगा। बने रहिए इस चैनल में, देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, यही तमन्ना है। तो आपके स्क्रीन पर पहला सवाल है, दिल्ली सल्तनत के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन शासन था, विद द रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहला बात पूछा जा रहा है इक्ता के बारे में। इक्ता लैंड was land assigned to official instead of payment for their services। मतलब जमीन दिया जाता था, पैसा नहीं, पेमेंट नहीं। In the hand of payment there is a provision for land assignment। Okay। खालिसा खालिसा land was the land under the direct control of the village council। खालिसा जो था क्या डायरेक्ट विलेज के काउंसिल के हाथों में था। और इनाम इनाम लैंड वाज असाइंड टू द सोल्जर्स फॉर देयर सर्विस। इनाम सोल्जर्स के था। खालिसा विलेज लोगों के हाथों में था। इक्ता जमीन है जो कि पेमेंट के स्थान पे दिया जाता है। यही चार बातें आपको इस प्रश्न में समझना है। तो विच आर द करेक्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, सबके सब एक, केवल और केवल एक सही है। देखिए, आफ्टर कंसोलिडेटिंग देयर पोजीशन इन इंडिया, दिल्ली सल्तनत इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन द लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। लैंड वेयर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। जमीन को तीन हिस्सों में बांट दिया गया। पहला लैंड था इक्ता लैंड। लैंड असाइन टू द ऑफिशियल, जो ऑफिस में काम करते थे, जो प्रशासन चलाते थे, उनको दिया जाता था, ना कि उनको वेतन दिया। वेतन के स्थान पर उनको जमीन जागीर दे, जागीरदारी प्रथा जो है ना, यहीं से शुरू हुआ। इक्ता लैंड से ही तो जागीरदारी है। ठीक है। तो लैंड असाइन या लैंड गिवन टू द ऑफिशियल एज ए इक्ता इंस्टीड ऑफ पेमेंट फॉर देयर सर्विस। काम कीजिए, भूमि ले जाएंगे, दैट्स ऑल। यही इक्ता था। खालिसा का मतलब होता है लैंड अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सुल्तान। सुल्तान के डायरेक्ट कंट्रोल में जो भूमि होता था उसी को खालिसा कहा जाएगा। एंड रेवेन्यू कलेक्टेड वेयर स्पेंड, और इस भूमि से जो रेवेन्यू मिलता था वहाँ वो स्पेंड किया जाता था मेंटेनेंस ऑफ रॉयल कोर्ट और रॉयल हाउस होल्ड। रॉयल कोर्ट और रॉयल हाउस होल्ड को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए ना, तो उसके लिए खालिसा से जो पैसा उठता था उसी से रॉयल मेंटेनेंस होता था। इनाम लैंड ये ग्रांटेड किया जाता था रिलीजियस लीडर्स को। इनाम लैंड जो है वो रिलीजियस लीडर सबको दिया जाता था। द पीसेंट्री पेड 1/3 ऑफ देयर प्रोड्यूस एज ए लैंड रेवेन्यू। जो किसान लोग थे वो अपनी उपज का 1/3 हिस्सा लैंड रेवेन्यू के रूप में चुकाते थे, और कभी कभी तो ये आधा भी होता था। दे ऑल्सो पेड अदर टैक्सेस एंड ऑलवेज लेड हैंड टू माउथ लिविंग। जिंदगी बहुत कष्ट में थी यार इन किसानों की। आधा हिस्सा अगर छीन लोगे उपज का, तो जिंदगी तो मतलब बस जी रहे हैं, उसी को कहते हैं हैंड टू माउथ, मतलब बहुत मिजरेबल लाइफ। फ्रिक्वेंट फेमाइंस मेड देयर लाइफ मोर मिजरेबल। और मतलब रह रह के फेमाइन आते रहता था, अकाल, जिससे उसकी जिंदगी और बदतर हो जाती थी किसानों की। अगला क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस टू द इकोनॉमिक ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन गेन मोमेंटम। दिल्ली सल्तनत के समय क्या अर्बनाइजेशन गति पकड़ लिया था? कॉटन, टेक्सटाइल, सिल्क इंडस्ट्री फ्लोरिश इन दिस पीरियड। तीसरा,
गोल्ड coins known as टंका, गोल्ड coin को टंका कहते थे, become popular during the reign of अलाउद्दीन खिलजी। देखिए जीतल के बारे में तो आपने सुना होगा, टंका के बारे में भी सुना होगा, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, ये सब का नाम तो याद है ना आपको। चलिए, आई थिंक यू नो अबाउट दैट, अर्बनाइजेशन कैसे कैसे हुआ और इसकी चर्चा आप करेंगे हम लोग। इकोनॉमिक ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, ड्यूरिंग दिस सल्तनत पीरियड द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन गेन मोमेंटम, शहरीकरण ने एक तरह से गति पकड़ ली, बहुत सारे सिटीज का निर्माण हुआ, नंबर ऑफ सिटीज एंड टाउन्स ग्रोन ड्यूरिंग दिस पीरियड, लाहौर, मुल्तान, बरोच, भड़ोच, अनिलवारा, लखनऊती, दौलताबाद, दिल्ली, जौनपुर बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। दिल्ली रिमेन द लार्जेस्ट सिटी इन द ईस्ट, ईस्ट का सबसे बड़ा सिटी अगर पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत के समय तो वो दिल्ली था। द ग्रोथ ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स वाज डिस्क्राइब बाय कंटेम्पररी राइटर्स, उस समय के जो समकालीन लेखक थे उनके द्वारा यह बात का जिक्र किया गया है कि किस तरह से ट्रेड और कॉमर्स अपने ऊंचाइयों को छू रहा था। इंडिया एक्सपोर्टेड ए लार्ज नंबर ऑफ कमोडिटीज टू कंट्रीज लाइक पर्सियन गल्फ, ऑन पर्सियन गल्फ, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इतने लोगों से हम लोग का व्यापार चल रहा था। ओवरसीज ट्रेड was under the control of Multan, an Afghan Muslim. Inland trade was dominated by the Gujarat Marwari merchant. Inland trade जो था वो डोमिनेटेड किया जाता था गुजरात मारवाड़ी की तरफ, जबकि ऑफशोर जो मतलब विदेशी जिसको बोलते हैं बाहर के देशों के साथ जो संबंध था, जो व्यवहार हुआ था, उसमें मुल्तानों लोगों का और अफगानों का कब्जा था। तो गुजराती मारवाड़ी मुस्लिम बोहरा मर्चेंट ये सब बहुत ही मतलब एक तरह से इनलैंड ट्रेड में बहुत माहिर थे, बहुत ही मतलब हुकूमत था इन लोगों का। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड देयर मेंटेनेंस फैसिलिटेड फॉर द स्मूथ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, particularly the royal road were kept in good shape, सराय जिसको रेस्ट हाउस कहते हैं, on the highways were maintained for convenience of travelers, यात्रा जो यात्रा करते थे यात्रियों के लिए बड़े बड़े सराय बनाए जाते थे, रेस्ट हाउस बनाया जाता था, मतलब एक तरह से बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है ये सब। कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क इंडस्ट्री फ्लोरिश, कॉटन हो सिल्क हो ये सब इंडस्ट्री पूरा फ्लोरिश कर चुका था हमारे उस समय में, दिल्ली सल्तनत के समय। सेरी कल्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन इंडिया, मेड इंडिया लेस डिपेंडेंट ऑन द अदर कंट्रीज फॉर द इम्पोर्ट ऑफ रॉ सिल्क। सेरी कल्चर के आने से भारत पूरी तरह से दबदबा हो गया था सिल्क इंडस्ट्री के मामले में। पेपर इंडस्ट्री had grown and there was extensive use of paper, 14वीं से 15वीं शताब्दी के समय बहुत विकास हुआ पेपर इंडस्ट्री का, एक्सटेंसिव यूज हुआ था पेपर का। अदर क्राफ्ट्स लाइक लेदर मेकिंग, मेटल क्राफ्ट्स, कारपेट वेविंग फ्लोरिश ड्यू टू द इंक्रीजिंग डिमांड, इनकी डिमांड बढ़ गई थी, पूरा मांग। रॉयल कारखानास सप्लाइड द गुड्स needed to the sultan and his household. They manufacture costly articles made of gold, silver, goldware. The noble also apt the lifestyle of sultan. ये जो नोबल्स लोग थे ना वो सुल्तानों की नकल करते थे, उनकी तरह जिंदगी जीना चाहते थे, लग्जूरियस लाइफ। दे आर वेल पेड, उनको वेतन बहुत अच्छा मिलता था। अकुमुलेटेड इनॉर्मस, बहुत सारा संपत्ति उन्होंने जमा कर लिया था। द सिस्टम ऑफ coinage had also developed during the Sultanate period. Iltutmish issued several types of silver टंका, ध्यान रहे सिल्वर को बोलते टंका। इल्तुतमिश, one silver tanka was divided into 48 जीतल during the खलजी rule and 50 जीतल को बोलते थे during the तुगलक rule.
गोल्ड coins या फिर दिनार become popular during the reign of Alauddin Khilji after his South Indian conquest. Copper coins were less in number and deathless. Muhammad bin Tughlaq had not only experimented token currency but also issued several types of gold coin and silver coins. मोहम्मद बिन तुगलक ने न केवल गोल्ड कॉइन का कॉपर कॉइन्स का इस्तेमाल ही किया बल्कि बहुत सारे टोकन करेंसी जारी भी कर दिया उसने. They were minted at the different places. At least 25 varieties of gold coins were issued by him. 25 से ज़्यादा प्रकार के गोल्ड कॉइन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इशू किया गया था. यही मोहम्मद बिन तुगलक जिसको बेचारा कह सकते हैं आप, जिसने ऐसी ऐसी नीति लाया लेकिन बेचारा काम नहीं हुआ. अब अगला सवाल है, एक तरफ किताब दूसरा तरफ उसके लेखक. तारिक ए फिरोज शाही, तबकात आई निसार नसारी और खैजान उल फुतहा. बताइए इसमें करेक्ट कौन सा है. तारिक ए फिरोज शाही, ये तो गलत दिया हुआ है तो इसलिए एक गलत है, दो और तीन सही जवाब है. क्योंकि तारिक ए फिरोज शाही जो है was the interpretation of history of Delhi Sultanate up to present ruler Firoz Shah Tughlaq. It was written by Ziauddin Barni. तारिक ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है. तबकात ए नासरी, an elaborate history of Islamic world written in Persian. पर्शियन में लिखा गया by मिनहाज सिराज के द्वारा. तबकात ए नासरी written by मिनहाज सिराज. The purpose of the Tabaqat-e-Nasri was to account for the Muslim dynasties that originated in Iran and Central Asia. Tabaqat-e-Nasri is the only source for Khalji rebellion in Bengal against Sultan of Delhi from 1229-30. एक है खजउल पुतहा, ट्रेजरर ऑफ विक्ट्री. खजाना उल फुतुह was written by अमीर खुसरो. अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया. ड्यूरिंग द अलाउद्दीन कंस्ट्रक्शन वर्क वार्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. कृष्णदेव राय के बारे में पूछा जा रहा है. कृष्णदेव राय किस डायनेस्टी से थे? तो तुलुवा डायनेस्टी से. तुलु कृष्णदेव राय वाज एन एम्पायर ऑफ विजयनगर एम्पायर, जिन्होंने 1509 से 1529 तक शासन किया. He was the third ruler of Tulwa, a Tulu dynasty, considered to be the greatest ruler of Indian history. He possessed the largest empire in India after the declining of Delhi Sultanate. दिल्ली सल्तनत के समाप्ति के बाद अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत में अगर सबसे ताकतवर सबसे विशाल साम्राज्य जो था तो विजयनगर साम्राज्य का था, और वो भी कृष्णदेव राय के शासनकाल में. He became a dominant ruler of the peninsula of India by defeating the Sultan of Bijapur, Golconda, Bahmani Sultanate, and Gajpati of Odisha, and one of the most popular, powerful Hindu ruler in India. So one of the most powerful Hindu ruler अगर पूछा जाए तो you can simply say it's a विजयनगर का राजा था वो. Various travelers indicate the king was not only an able administrator but also excellent general, leading from the front in the battle and even attending the wounded. On many occasions, the king changed battle plans
abruptly turning a losing battle into the victory। देखो, राजा इतना महान था कि कभी कभी अपने नीति को, युद्ध नीति को इतना जल्दी बदल देता था कि हारी बाजी भी जीत लेता था वो। ये थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर एम्पायर के थे, तो उनके कोर्ट में कौन कौन था? कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गज में डोमिनो पायास, अब्दुल रज्जाक, निकोलो कॉन्टी। हु विजिटेड, यहाँ पर कौन कौन उसका अष्टदिग्गज नहीं बल्कि कौन कौन उसका विजिटेड किया? अब्दुल, निकोलो कॉन्टी, डोमिनो पायास। विच आर द करेक्ट? अब्दुल रजाक तो दूसरे के शासनकाल में, आई थिंक यू नो अबाउट दैट, इज ए ओनली एक। डोमिनो पायस was a Portuguese traveler who visited Vijayanagar Empire. His visit took place during the Krishnadev Rai. कृष्णदेव राय के शासनकाल में उस समय आया था वो। पायस recorded his impression of Vijayanagar state in Chronica dos Bisnaga, मतलब Chronicle of the Vijayanagar Kings। His detailed account is one of the few known description of that empire and of its capital, Vijayanagar in Hampi, by a traveler from abroad. Abdul Razak was a Persian Timur, Timurid chronicler, Islamic scholar. He was for a while the ambassador of Shah Rukh, Timur dynasty ruler of Persia. He visited Vijayanagar kingdom at the time of देवराय द्वितीय। हालांकि उसने विजयनगर साम्राज्य का दौरा तो किया, लेकिन देवराय द्वितीय के समय। निकोलो कॉन्टी एक इटालियन मर्चेंट, एक्सप्लोरर, राइटर। ही विजिटेड विजयनगर किंगडम। इसने भी विजयनगर किंगडम का यात्रा किया था, लेकिन देवराय प्रथम के शासनकाल में। तुल्ला डायनेस्टी का रूलर था ये। With the reference to the administration during the reign of Sher Shah Suri, which of the following is are correct? एक तरफ मिनिस्टर, दूसरा तरफ इंचार्ज। दीवान ए अरीज या अर्ज, दीवान ए रसालत, दीवान ए इंसा। तो क्या दीवान ए अर्ज चार्ज ऑफ आर्मी, दीवान ए रसालत मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, या दीवान ए इंसा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन मिनिस्टर? चलिए, इसका सही जवाब ए है, शेर शाह एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द रूल ऑफ शेर शाह सूरी लास्टेड फॉर 5 years। 5 साल तक शासन किया इसने। ही ऑर्गेनाइज ए ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। द सेंट्रल गवर्नमेंट consisted of several departments. The king was assisted by the 4 important ministers. दीवान ए विजारत, जिसको वजीर कहते थे, वजीर, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट का हिस्सा उठाता था। तो राजस्व और वित्त विभाग का प्रमुख को कहते थे वजीर, दीवान ए वजारत। दीवान ए अरीज या अर्ज, चार्ज ऑफ आर्मी। दीवान ए रसालत, फॉरेन मिनिस्टर। दीवान ए इंसा, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, संचार मंत्रालय उसके पास था, इंसा के पास। रसालत के बाद विदेश मंत्रालय था। लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन was well organized under Sesha Suri. Land revenue was carefully done. All cultivable land were classified into 3 classes: good, middle, and bad. The state share was one third. State का शेयर जो था 1/3 था of the average produce, and it paid in case। ध्यान रहे, केस में भी, क्रॉप में भी। His revenue reforms increase the revenue of the state। शेर शाह सूरी इंट्रोड्यूस न्यू सिल्वर कॉइन, जिसको दाम कहा गया है। दाम, सिल्वर कॉइन, जो सिल्वर कॉइन था, दाम, उसको शेर शाह सूरी ने इंट्रोड्यूस किया। दे वेयर इन सर्कुलेशन टिल
1835 तक सोचो चला. शेर शाह had also improved the communication by laying four important highway. चार important highway का निर्माण किया गया उसके द्वारा. सोनार गांव से सिंध तक, आगरा से बहरमपुर तक या बुरहानपुर, जोधपुर से चित्तौड़ तक और लाहौर से मुल्तान तक. Rest houses were built on the highways for the convenience of the travelers. Police was efficiently reorganized, and crime was less during his time. Military administration was efficiently reorganized, and Caesar Suri borrowed many ideas like branding of horses from अलाउद्दीन खिलजी. उसने अलाउद्दीन खिलजी के बहुत से नीतियों को अपना लिया, जैसे कि उनमें से एक है घोड़े को दागने की प्रथा. ब्रांड करने का, चेहरा दागना, घोड़ा दागने से अलाउद्दीन खिलजी का था. अगला क्वेश्चन है मुगल रूल से. मीर समन वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंडोर्सिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ मनसबदार. मीर समन मनसबदारों को नियुक्त करता था. मीर बख्शी वाज द ऑफिस ऑफ इंचार्ज ऑफ रॉयल कारखाना. दीवान कुल या दीवानी कुल वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू एंड फाइनेंसेस. चलिए, समन जो था, मीर समन, पहला ही स्टेटमेंट आपका गलत हो गया है, इसलिए केवल 3 सही है. मुगल एम्पायर हैड अ पैन इंडिया कैरेक्टर, pan India character. Babar and Humayun were the reason for their brief reign, and that of being busy in military matters, could not concentrate on establishing a definite system or pattern in administration. But by the end of Akbar reign, we find establishment of elaborate offices with assigned function to the head of the office. The rules, the regulation, the guidelines, both the public and the private conduct had all been fixed so that the officers were converted into what can be termed the apparatus of the empire. Let's see one by one. Mir Saman. Mir Saman was the officer of in charge of the royal कारखाना. रॉयल कारखाने की देखभाल करता था मीर समन. He was also known as Khan Saman. He was the chief executive officer, responsible for the purchase of all kinds of articles and their storage for the royal household. Another important duty was to supervise the manufacture of different articles, be it weapons of war, articles of luxury. He was directly under the empire, but for sanctions of money and auditing of accounts, he was to conduct the divan. लेकिन अगर उसको बात अगर मनी का सैंक्शंस लगाना हो, ऑडिटिंग करना हो अकाउंट का, तो उसको दीवान से कांटेक्ट करना पड़ता था. मीर बख्शी या मिराज, द दिल्ली सल्तनत changed its nomenclature Mir Bakshi under the Mughals. All orders of appointments of the Mansabdar and their salary papers were endorsed and passed by Mir Bakshi. Personally, he personally supervised the branding of horses, dog, check, and muster all roll, chehra of soldiers. On the basis of his verification, the amount of the salary was certified. Only then Diwan made
entry his records and place it. Before the king, Mir Bakshi placed all matters pertaining to the military department before the emperor. New entrants seeking service were presented before the emperor by the Mir Bakshi. Diwan-e-Kul, chief diwan, so called Diwan-Kul, was made for responsible for revenue and finances. His primary duty was to supervise the imperial treasury and check all accounts. He personally inspected all transactions and payments in all departments. He maintained direct contact with the provincial divans, and their function was put under his vigil. His seal and signature was necessary for the validation of all official papers involving revenue. The entire revenue collection and expenditure machinery of the empire was under Mirakul, Diwanekul. No fresh order of appointment or promotion could be affected without his seal. To check the Diwan's power, the Mughal emperor asked the Diwan to submit the report on the state financial daily. With the reference to the administration under the Mughal rule, consider the following. Ports were separate, independent units of administration under the Mughals. Parganas were the administrative unit below the Sarkar. Amal Gujar was the executive head of the Parganas. परगना जो था वो सरकार से नीचे होता था क्या? परगना बिलो द सरकार। चलिए यही तो आपको पकड़ लेना था, एक और दो सही है। देखिए पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन, बंदरगाहों का प्रशासन किस तरह से चलता था। मुगल्स वेयर अवेयर ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ सी पोर्ट एज दिस वेयर द सेंटर ऑफ brisk commercial activities. The port administration was independent of the provincial authority. The governor of the ports was called Musta, Musta, Mustasadi, who was directly appointed by the emperor. किंग के द्वारा डायरेक्ट उसका नियुक्ति होता था मुस्तादी का, मुस्तदी 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 खाली का मुस्तदी मुसद्दी लाल, ये पढ़े आप, मुस्तदी लाल. Sometimes the office of the mustadi या mustastadi was auctioned and given the highest bidder. Mustastadi collected taxes on merchandise and maintained a custom house. He also supervised the mint house at the port. Sabha Bandar, Saha Bandar, Saha Bandar was his subordinate who was mainly concerned with the custom house. Pargana administration. Parganas were the administrative unit below सरकार. परगना जो था सरकार के ठीक नीचे आता था. सिकदार was the executive officer of परगना. सिकदार जो था वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता था परगना का, और उसको सहायता देने के लिए अमील्स होता था रेवेन्यू कलेक्शन में. असिस्टेड दी अमील्स, अमील्स को सहायता देता था इन द अमील. द अमील लुक्ड आफ्टर द रेवेन्यू कलेक्शन एट द परगना लेवल. ध्यान रखिएगा, परगना लेवल पर रेवेन्यू कलेक्शन का देख रेख अमील के द्वारा किया जाता. His duty were similar to those of अमल गुजार एट सरकार लेवल. सरकार लेवल पे अमल गुजार के जैसा ही काम था उसका, आमिल का. कानूगो, ये कानूगो kept all the records pertaining to the land in his area.
He was also take note of the different crops in Pargana. Amal Gujar, the most important revenue collector was the Amil या फिर अमल गुजार एट द सरकार लेवल में रेवेन्यू कलेक्ट करने का सबसे बड़ा पदाधिकारी था अमल गुजार. His primary duty was to assess and supervise the revenue collection through other subordinate officers. A good Amil या Amal Gujar was supposed to increase the land tinder cultivation and induce the peasant to pay revenue willingly without coercion. All accounts were to be maintained by him. Daily receipts and expenditure reports were sent by him to the provincial divan. अगला क्वेश्चन है which of the following each are the chief elements of the style of architecture that evolved under the Akbar's patronage. अकबर के शासनकाल में कौन कौन सा कला तमक या फिर कह सकते हैं स्थापत्य कला का विकास हुआ. Widespread of the use of white marble as the building material. Arc, the arc used mainly in decorative form rather than structural form. Widespread use of trabeated construction. ट्राबीटेड कंस्ट्रक्शन क्या होता है. पहला दूसरा स्टेटमेंट तो ऐसे छाटिए, दो और तीन सही है केवल. Akbar reign can be taken as a formative period of Mughal architecture. It represents the finest example of the fusion of Indo-Islamic architecture. The architecture of the reign Akbar represent encouragement of indigenous technique and a selective use of experiences of the other countries. The chief elements of the style of the architecture that evolved under Akbar's patronage can be listed here. The buildings mainly use a red sandstone. याद रखिएगा लाल चूना पत्थर का इस्तेमाल होता था, लाल बलुआ पत्थर का as a building material. A wide spread of terracotta construction. Trabeated. Arcs with sharp used mainly in a decorative rather than structural reform. Dome was the Lodi type, sometimes built hollow but never technically of the true doubled order. The shafts of the pillars were multifaceted, and the capitals of these pillars invariably took from the bracket supports. Decoration comprised of broadly carved inlaid patterns complemented by brightly colored patterns on the interiors. देखिए दिया हुआ है कि टर्बीटेड सिस्टम ऑफ कंस्ट्रक्शन होता क्या है. Trabeated system of architecture, it is a building system where strong horizontal elements are held by strong vertical elements with the large spaces between them. This is usually used to hold up a roof. छत का वजन ढोने के लिए इतना भारी वजन कैसे होता है, इसके लिए एक हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स उसको खड़ा कर दिया जाता था वर्टिकल एलिमेंट्स के ऊपर. खंबा सब जिसको बोलते हैं पिलर्स. This is the usually used to hold a roof, creating a large open space beneath for whatever use the building is designed. Which of the following were the cause of declining Mughal rural India? Absence of definite law of succession, degeneration of nobility, invasion of Irani and Durrani kingdoms. दिए गए पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है, तीसरा भी आप मान ही लीजिए क्योंकि प्रोसेस ऑफ दी disintegration of Mughal Empire began during the reign of Aurangzeb, but it picked up momentum only after his death 707 1717 में मृत्यु हुई. उसके बाद एक तरह से डिक्लाइनिंग हो गया. Some of the main cause
or the declining of the Mughals were as follows. The government of the Mughals was a personal despotism, and so its success depends upon the character of the reigning ruler. Later Mughals were worthless and neglected the administration of the states with the absence of a definite succession law या law of succession ना होने के कारण there always occurred a war of succession. This weakened the stability of the government, fostered partisanship at the cost of patriotism. Degeneration of the rulers lead to degeneration of nobility, with the factious quarrel and intrigues costing the empire heavily. The deterioration of army also proved disaster for the empire. The emperor had become too vast and unwidely to be efficiently governed from the central authority under the big rulers, especially under the existing condition of transport and communication. Aurangzeb's religious policy was largely responsible, leading to the revolts by Rajput Sikhs, Jats, Marathas. Aurangzeb's Deccan policy was a complete failure and was the important cause of the downfall of the Mughal Empire. Invasion of Irani and Durrani kingdoms gave a death blow to the Mughal Empire. With the reference to the Maratha administration, consider the following statements. Mira Sadars. Mira Sadars were resident cultivators with hereditary rights of occupancy. The Ashpradhan was the council of 8 ministers that administered the Maratha Empire. Mir Sadars were the resident cultivators with the hereditary right to the occupancy. No, so I think only both are correct. Mir Sadars या मीरास दर्स लिखा है कि मीरास दर्स were residents of the village who had permanent right, proprietary right in their land and could not be ejected or disposed so long as they paid their rent. The property of Miras Sadars were hereditary and saleable and even ejected for the non-payment of land tax. Mir Sadars did not lose the right of recovering their ancestral farmland for a long period. The Ashtapradhan, the Council of Eight, was Council of 8 ministers that administered the Maratha Empire. The system was formed by Shivaji. Ministerial designation were drawn from Sanskrit language and comprise Pant Pradhan या Peswa, Prime Minister, General Administration of Empire, अमात्य या मजूमदार, अमात्य कहिए मजूमदार कहिए, ये होते थे फाइनेंस मिनिस्टर मैनेजिंग अकाउंट्स ऑफ एम्पायर, सचिव सेक्रेटरी प्रिपेयरिंग द रॉयल edicts, मंत्री इंटीरियर मिनिस्ट्री मैनेजिंग इंटरनल अफेयर्स स्पेशली इंटेलिजेंस एंड एस्पियोनेज, सेनापति कमांडर इन चीफ managing the forces and defense the empire, Sumant foreign minister manage relationship with other sovereigns, Nyaya Adhyaksh chief justice dispensing justice on civil criminal matters, or Pandito Rao high priest managing an internal religious matter. With the reference to the administration under the Mughal, consider the following statement. लेटर मुगल्स के बारे में पूछा जा रहा है. जहांदर शाह इंट्रोड्यूस या री इंट्रोड्यूस जजिया.
It's Jahandar Shah. Nizam a Mulk. Nizam ul Mulk founded the independent state of Hyderabad during the reign of Ahmad Shah, which are the correct about later Mughals. I think it's a D, neither A1, neither 2. Jahandar Shah, with the help of Zulfikar Khan, Jahandar Shah became emperor. जुल्फिकार खान की मदद से जहांदर शाह राजा बनता है. जुल्फिकार खान वॉज अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर. जुल्फिकार खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है. ही इंट्रोड्यूस जजिया. No. He introduced Ijara system. To introduce Ijara system to financial condition to improve the financial condition. Ijara. He abolished जजिया. हालांकि उसने जजिया को समाप्त किया था जहांदर शाह ने. जजिया was a tax per capita early taxation levied in the form of financial charge on permanent non-Muslims, subjects of the state government by Islamic law. In 1724, Nizam ul Mulk became the Wazir and founded the independent state of Hyderabad during the reign of Muhammad Shah. Both before the Muhammad Shah, with the help of Nizam Mulk, killed Sayyid brothers. Muhammad Shah, before the Muhammad Shah, with the help of Nizam Mulk, killed Sayyid brothers Abdullah Khan and हसन अली. उसको कहते थे किंग मेकर्स. अब्दुल्ला खान और हुसन अली को किंग मेकर्स कहा जाता है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सफ्तर जंग वाज द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रिंसिपलिटी या प्रिंसिपैलिटी ऑफ अवध. मुर्शिद कुली खान वाज द फाउंडर ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल. B is the right answer. Awadh. The founder of independent principality of Awadh was Sadahat Khan, या Sahad Khan, या Sadat Khan, popularly known as Buhran ul Mulk. या Sadat Khan was a Shia. He had joined in conspiracy against the Sayyid brothers, which resulted in his being given an increased mansab. Later, driven of the court, he was promoted to found a new independent state. Sadat Khan committed suicide due to the pressure from Nadir Shah, who was demanding a huge booty from him. सादत खान ने आत्महत्या कर लिया नादिर शाह के भारी डिमांड के कारण. He was succeeded by Safdarjung. सादत खान के बाद सफदरजंग आता है as the नवाब of अवध. बंगाल की बात करें, Murshid Quli Khan was the founder of the independent state of Bengal. He was a capable ruler and made Bengal as a prosperous state. He was succeeded in 1727. 1727 में गद्दी पर बैठता. He was succeeded. उसका बाद उसका बेटा आता है सजाउद्दीन. उसके बाद उसका सक्सेसर आता है सरफराज खान, जिसको 1740 में अलीवर्दी खान के द्वारा मार दिया जाता है. डेप्यूटी गवर्नर बिहार का था वो, घेरिया का घरिया. He assumed the power and made himself independent of the Mughal emperor by giving yearly tribute. और अलीवर्दी खान फाइनली बन जाता है बंगाल का शासक मुगल एम्पायर के विद्रोह करके. अगला प्रश्न. which of the following were the factors responsible for declining of the Portuguese in India? Which of the following were the factors responsible for the declining of Portuguese power in India? Diversion of Portuguese, interest to Malaya
archipelago, Malaya archipelago, rise of Maratha, religious policy of Portuguese. Of course, मराठा का उदय, बाप रे मराठा कहाँ से आ गए इतने जल्दी? इसका सही जवाब है 2 और 3। देखिए, पुर्तगीजों का डिक्लाइन का सबसे बड़ा कारण, by the 18th century the Portuguese in India lost their commercial influence, though some of them still carried on trade in their individual capacity, and many took to piracy and robbery. In fact, Hooghly was used by some Portuguese as a base for piracy in the Bay of Bengal. The declining of Portuguese was brought about by several factors. The local advantage gained by the Portuguese in India were reduced with the emergence of the powerful dynasty in Egypt, Persia, and North India, and the rise of the turbulent Maratha as their immediate neighbors. The Maratha captured Salsette, Vasin in 1739 from Portuguese. The religious policy of the Portuguese, such as the activities of Jews, gave to the rise of the political fears. Their antagonism for the Muslim apart, the Portuguese policy of conversion to the Christianity made Hindus also resentful. Their dishonest trade practices also evoked a strong reaction. Portuguese earned notoriety as sea pirates. Their arrogance and the violence brought them the animosity of the rulers of small states and the imperial Mughals, as well as the discovery of Brazil diverted colonizing activities of Portugal to the west. The union of the two kingdoms of Spain and Portugal in 1581, dragging the smaller kingdom into Spain's war with the England, Holland, badly affected Portuguese monopoly of the trade in India. The earlier monopoly of knowledge of the sea route to India held by Portuguese could not remain a secret forever. Soon enough, the Dutch, the English, who were learning the skills of the ocean navigation, also learned of it as the new trading communities from Europe arrived in India. There began a fierce rivalry among them. In this struggle, the Portuguese had to give way to the more powerful and enterprising competition. Danish East India Company. Danish East India Company established their factory at सूरत, बिमलीपट्टम। डेनिस लोगों ने कहाँ बनाया था? से Travancore. Danish East India Company was established in 1616, and in 1620 they founded a factory at Travancore near Tanjore on the eastern coast of India. Their principal settlement was at Srirampur near Calcutta. Danish factories, which were not important at any time, were sold to British government in 1845. Danes are better known for their missionary activities than for commerce. इस तरह से तो बने रहिए इस चैनल में, देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए मेरे दोस्तों। थैंक यू।